The movement was Assam Andolan, Assam movement. So at the time we didn't object it. These people taking the advantage of education, taking the advantage of media and all, they are misinterpreting our movement. Actually our movement was not also so violent. It was not started by this arms movement. How it gone up to that level, how it gone that direction, it's a history. Now these people still try to misinterpret our everything. So when there is a bomb blast, they don't say that this NDBB giving the bomb. It's a Boro Ugraponti, Boro Ugrabadi, Boro this. Anytime they misinterpret this thing. But that hurt us. Clause 6 was opposed by the Boros. Yeah, said about like the बोरोस का जो कल्चरल राइट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. Yes. उस क्लोज 6 को आपने ऑब्जेक्ट किया था. Yes. Still we object that clause. Because that again talks about your culture. Yeah. We want to live with our identity, existence, culture, and is it not possible under the preview of India, the preview of any state, that your culture is protected because government of India's constitution guidelines? There is no impossibility. It is possible. But how far do you get goodwill? That is the main thing. Okay. Yeah. How do you share the culture of others? Because you see now that's this problem. Suppose this is India. This is Assam, whatever it is. In Assam or India, you see that Bihar. You say basically Bihar means for Biharis. It's not like in general. But Bengal is also there, Uri also there, Arab also there. But when we are talking about other states in India, like the constitution भी बोलता है कि you can go anywhere, reside anywhere. It's a state. In only tribal states, ethnic problem we see. Most of the tribal areas we have seen this ethnic problem. They are protected because you can settle anywhere. You can be a part of parcel of anywhere. You can purchase their property. But in case of tribal area, there are some restriction is there. Yeah. If restriction is not properly followed, not properly maintained, not properly the administrative officer taken into consideration, there definitely some problem will come up. Maharashtra also. Sometimes you see Maharashtra. This situation happened in Maharashtra also. This kind of situation with Biharis. We have seen some the last year also. So this is because of only in the northeastern region you see the ruling role of the ruling community, ruling clique or whatever, ruling class people, that their role is all the time negative towards the tribals. That's why it was in 71 the northeastern states had reorganized. So now you see most of the tribals of the other states, they are feeling very much secure in their states. They are feeling very much secure. We are also tribal of the same the characteristics, this thing. Can you specify some reasons that why you are insecure in Assam? Because this ruling. So many reasons. Yeah. Because first is land, then culture, then language is coming, then your economic. But now in India we have so many developmental packages which is entirely given for all the parts of the state of Assam, or so to say entire northeast. I am giving one example. This year, state government of Assam has got 9,000 crore for planning commission money from government of India. Okay. Yeah, they have to equally distribute it to all districts. Yes. In BTC, the BTAD, we have 4 districts. If we distribute this money equally, then BTC have to receive 1,080 crore out of 9,000 crore. Now government of Assam is giving 289 crore this year. This is the living example, and earlier we can give so many examples. How they distribute. Do you feel that government of Assam or government of India बोलता है कि आपको एक काउंसिल दे दिया, आपके पास ये राइट्स है, आप जो करने वहाँ पे करिए और आपको आपका फैसिलिटी मिलेगा? He might say that is the done committed. Okay, we have done it. No. That BLT has committed a mistake. Today I am saying frankly, BLT has committed a mistake because whatever it is the development money, it will come. What will be the salary component? It will come, but finance department is not with BTC. Okay. That salary component also go to the BTC. That time I was standing council of BTC. That I oppose or don't take the salary component. Salary component because you don't have the finance department. The salary component they are putting to BTC that this crores, 1,000 crores is given to BTC. But out of 1,000 crores, 500 crore is salary component. Only 500 crore is for the development. But in a terms, you see,
200 crore is given to BTC. Though nobody knows that 100 crore is for the salary company. Let us fix. If it is within Assam, within India, within some districts, salary company is fixed. So I'm telling one thing. That part they have missed, because that's why in the figure of this, that is very high. But for the development, it is very low in comparison to other districts or other areas. I'm telling one thing that BTC एक मैंने पहले भी जैसे बोला कि आपको ये इंटरमीडिएट टाइप का एक अरेंजमेंट है, इसमें फुल ऑटोनॉमी नहीं है. तो हमारा प्रॉब्लम है असम सरकार से. तो अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि अनफॉर्चुनेट थिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई अभी हम इंडिया से तो सेपरेट होने नहीं जा रहा है. इंडिया में ही एक स्टेट बनेगा. इंडिया में और 2 स्टेट बने, 50 स्टेट बने, इससे क्या फर्क पड़ता है विद इन द इंडिया. अभी इंडिया सोच रहा है कि ज्यादा स्टेट होने से हमको प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम नहीं भी तो हो सकता है. तो अभी बीटीसी काउंसिल जो है, तो हमारा प्रॉब्लम था स्टेट गवर्नमेंट को लेके. ये एनी टाइम ऑटोक्रेटिक एक बिहेव करता है, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है. तो उसमें अभी जो है बीटीसी में होम नहीं है, बीटीसी में फाइनेंस नहीं है, बीटीसी में जितना हमने चाहा था वो सब नहीं है. लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बार बार ऐसा अरेंजमेंट करता है जो अरेंजमेंट को रिजेक्ट करके फिर मूवमेंट करना पड़ता है. समथिंग शॉर्ट एनी टाइम हाफ हार्टेड, मैंने जैसे आपको बोला था, हाफ हार्टेड एटीट्यूड. एंड स्टिल एनडीबी को हमारा जो होम मिनिस्टर सिदम्बरम जी है, होम मिनिस्ट्री में जो भी है, वो लोग वही प्रेशराइज करेगा कि आप बीटीए में ही मोर पावर ले लो, थोड़ा बाउंड्री एक्सटेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो. अभी कार्बी आंगलों में हुआ है, यूपीडीएस को वो लोग टेरिटोरियल काउंसिल बना के दिया. काउंसिल बना के देने के 1 महीने के बाद ही फिर ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट हुआ, बंद कर दिया. केएसए ने, कार्बी स्टूडेंट जो है एसोसिएशन, उसने बंद कर दिया कार्बी आंगलोंग बंद, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट. मैंने गया था उस दिन, तो क्या हुआ, तो मैंने सरप्राइज हो गया. तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि ये लोग क्या मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, ये लेजिटिमेट है कि नहीं. लेजिटिमेट अगर नहीं है उसको मना कर दो, 100% बोल दो कि ये. प्रमोद जी, हम एक छोटे से ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. वेल, वी हैड इन फॉर शॉर्ट ब्रेक नाउ. 1800113090 ককা খুৰাই সদায় এইটো নম্বৰে গাই থাকে. বন্ধুটো কাৰ নম্বৰত দেউতা তুমি মিছাতে সন্দেহ কৰি থাকা. এজন এজেণ্টে গালফতবোৰ চাকৰি ঠিক কৰি দিলে. ৰেজিষ্টাৰ্ড এজেণ্ট হয়তো, ট্ৰেভেল এজেণ্টটো নহয়. মই প্ৰবাসী ভাৰতীয় কাৰ্য মন্ত্ৰালয়ৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 1800113090 পৰা সকলো তথ্য যোগাৰ কৰি লৈছো. এজেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড হয়, তেওঁ ফিজ কিমান দিব লাগিব আৰু কোম্পানীৰ বিষয়ে সকলো. অধিক জানিবৰ বাবে প্ৰবাসী ভাৰতীয় কাৰ্য মন্ত্ৰালয়, ভাৰত চৰকাৰ. मैं यहाँ दुबई में 2 साल से हाउसमेट की नौकरी कर रही हूँ, आराम से. 30 साल की उम्र के बाद मैंने वर्क वीजा अप्लाई किया. इंडियन एम्बेसी ने मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर अटेस्ट किया. जब भी आप विदेश में नौकरी करने आए, वर्क वीजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और एजेंट से जुड़ी सभी बातों का ध्यान रखें. 10 देशों में हाउसमेट की नौकरी के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस से जुड़ी सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें, वरना आप वहाँ किसी भी तरह के शोषण का शिकार हो सकते हैं. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. Welcome back after this short break. Well, before heading for the break, we were discussing a very important question about autonomy and the Bodoland Territorial Council, and Mr. Pramod was mentioning about how in Karbi Anglong it has created a problem, though you don't have an autonomy with the UPDA signing the peace accord. In such a situation where we see that government of India is saying that you have your autonomous council where you can, address your problems, you have your legislators sitting there, you have your members sitting there who can take up issues about development or be any political issue, but still we see that the solution is not there with this council also. So your take, or maybe anybody? I will appeal the government of India now as a Home Minister Sidambaram. Once he also said, when we met him last 2 years before, he said that it's a very big council. Your council is biggest council all over the India. Now I will tell him that council is very big for you, very powerful for you, not for us. ये जो काउंसिल है ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, हाँ, हमारे लिए लेकिन कुछ भी नहीं है. हम इसको कभी भी नहीं मांगा था. अभी अगर ऐसा सिचुएशन आप तेलंगाना में करेगा, कहीं भी करेगा, आप देखेंगे वो दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग दे हैव गिवन टेरिटोरियल, गोरखालैंड टेरिटोरियल काउंसिल.
जो गोरखालैंड टेरिटोरियल काउंसिल जब दिया था, बिमल गुरु ने सिग्नेचर ही नहीं किया। वो बोला कि फुल फ्लेजेड सेपरेटिस्ट चाहिए। तो अभी हमें वो लोग 6 शेड्यूल दिया है, तो 6 शेड्यूल में ये काउंसिल में जो है वो लोग दे देमसेल्फ काउंसिल में एक रिजोल्व किया है, एक रेजोल्यूशन लिया गया हमको फुल फ्लेजेड सेपरेटिस्ट चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट कैन एड्रेस आवर प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा जो कुछ भी हमारा ये पर्पस को साफ नहीं करता, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है इसको देखिए आप, मैं नहीं मांग रहा है लेकिन प्रोविजन तो है ना, यूनियन टेरिटोरी का प्रोविजन है, फुल फ्लेजेड सेपरेट स्टेट का प्रोविजन है, और 244 ये असम के लिए है, और दिमासा कर भी तो 244 ही ए मांग रहा है, 244 ए दे देते तो क्या जाता, टेरिटोरियल काउंसिल देना 244 ए देना, उसमें क्या फर्क है? तो 244 ए देने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो वो लोग सुनता है आसाम गवर्नमेंट से, और आसाम गवर्नमेंट तो एंटी ट्राइबल है, टोटली एंटी ट्राइबल। अभी मिसिंग को 6 शेड्यूल काउंसिल दिया, उस काउंसिल में ना इलेक्शन ना क्या है। राभा को नॉट 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल दिया, तो वो राभा असम में ऑटोनोमस काउंसिल दिया, ना इलेक्शन ना क्या, कुछ भी नहीं है। 17 years without any election. तो अभी गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला था, जब तक उनको श्योर नहीं होगा कि अभी जो स्टेट में रूलिंग है उनका ही रिटर्न होगा, कि उनका ही आदमी उसमें इलेक्ट कर पाएगा, तब तक जब तक ये श्योर नहीं होगा तब तक वो लोग इलेक्शन नहीं करेगा। जब उनका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया ग्रास रूट में कि अभी इलेक्शन करने से हमारा कांग्रेस ही आएगा, तो वो लोग इलेक्शन कर देगा। तो ऐसा हमें जो इंडिजिनस पीपुल्स है, ट्राइबल्स है, सिटीजन है इस देश का, इसको पॉलिटिकली क्यों इसमें डालते हैं, आपका इसमें मोटिवेटेड पॉलिसी में क्यों डालता है? तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और बोडो जो है, अभी बोडो को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा कंडीशन के लिए सेपरेट स्टेट नहीं दे सकता है, बोलिए कौन सा कंडीशन? वो लोग बोलते हैं नो मोर डिवीजन ऑफ असम, व्हाट्स दिस? नो लॉजिक। Maybe the government of India feels that if they give Boros a state, the other tribals in Assam will also follow suit of the Boros. No, not an hard and fast. I am not in support of Bodoland or not against the Bodoland. Just I am telling the it is not a hard and fast. The Article 3 of the Constitution specifically saying they can fear. Yes. Parliament can fear with the consent of the President of India. There is no bar. Yeah. It's not a hard and fast. But whether it is viable or not viable, it is genuine demand or ungenuine demand, that is different thing. But there is no hard and fast rule that cannot be. There are no further division, no more creation of. Okay, when we are talking about statehood, it is only for the protection of the land, the culture, the tribes and their rights. Are we not thinking as if when the vibrant economical होगा या नहीं होगा, क्या स्टेट सेल्फ सस्टेनेबल होगा, क्या हम ये सब प्रोड्यूस कर पाएंगे, या हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड के लिए? हमारे पास Prior to that different question of Bodoland in different demand of state, other state is different. Telangana is different. They have the Telangana which boundary they are demanding. This is not a, they have not a recognized law. They don't have own culture. Just one area economically developed under that is a question. In case of Darjeeling, to some extent similar. In case of Bodoland is different because the whole Assam to some extent prior to it is reserved for the tribal people. Not reserved. That Britishers when they came to India, they thought it is only for the tribal people. When the outsider came, occupied the land, they feel that they are threatened in their homeland. They feel insecure. That's why they need homeland only for their security. Forget about our, they are not talking prior to that this president said. You're trying to make a point. Not for development. The security of They are feeling they want to secure their culture, their language, their ethnic identity, everything. Forget about development. Development will do. But first, if you are insecure, you don't have a house, you don't have a land, where you will stay? Until unless you have a house, where you next day morning you will go for what? When you have a good sleep at night. This is the situation. Yeah, this is the situation. Now this Mizoram, Manipur, Arunachal, their land is very much protected because their government is committed. Committed for their people, and Assam government is never committed. No committed. They where they are and they will never be committed for the tribals. How tribal lives, how they protect themselves, how their identity will be preserved, they
don't have any seriousness about this. See, one thing. Other thing, मैं यही बोल रहा था आपको फिजिबिलिटी का जो बात आपने पूछा था, तो अभी आप बोलिए